Hello and welcome back to another episode of School of Thought. So in this episode, we will address another very common query that we get from our clients that I have extra liquidity, Abhishek. अभी ऐसा करते हैं, लोन चल रहा है मेरा, उसको क्लियर ऑफ करते हैं rather than investing in the markets, या फिर मार्केट से पुल आउट करके मेरे को अभी अपना होम लोन ख़त्म करना है. बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में. सो कैलकुलेशन करते हैं. सो अगर मान लो, अगर आप एक बार स्क्रीन पे देखिए जो आपको होम लोन के रेट्स दिख रहे हैं, राइट, 6.5, 6.7, 6.4 के आसपास है सारे रेट्स. अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करते हैं. लेट्स लुक एट आवर स्क्रीन्स. So let's say if I had taken a loan of, let's say, 1 crore. The rate of interest right now, as I already showed you, is about 6.5. Let's take an average of 6.5, and let's take that it's a 10-year loan that I have taken. My EMI is about 1,13,000. The interest payable is about 36 lakhs. In totality, in this 10 years, I have to pay 1 crore 36 lakhs. Now, on the contrary, so let's say if I have 1 crore today, rather than paying off my home loan, what I told you before as well, that it's better to invest that into an equity market, or let's say depending on a risk appetite in an investment portfolio. Let's take a look at that as well. So let's say I have 1 crore today. Instead of paying off my home loan today, I invest that in let's say the equity markets. I've taken an average return of 14%. This is a very conservative return which I've taken for the 10 years. The return is close to it's on a higher side. I don't want to give you a return figure right now, but let's take a 14% kind of a rate and calculate. So this corresponds to a maturity value of almost 4 crores. What this means is, if I would have closed my loan today, if I had 1 crore, I would have saved interest of 36 lakhs. Understandable. But I would have missed out on this opportunity cost. So what does this correspond to? After 10 years, when I close my loan with this 1 crore which I had 10 years back, I would have 4 crores. Out of this 4 crores, I would have paid about 36 lakhs of interest, returned the premium. I would have paid about 1 crore 36 lakhs to the bank from which I borrowed the loan. But at the end of it, I would have 2 crore 64 lakhs additional liquidity with me right now. So as you saw कि एक लोन को जो 10 साल से चल रहा है ना बंद करके अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं at a bare minimum 14% per annum for the next 10 years, I end up getting 4 crores, right? And how much did I have to pay for the loan, including the interest? 1 crore 30 lakhs. राइट. सो देन ऑल्सो मेरे पास अराउंड 2 crore 60 lakhs की लिक्विडिटी रहती है, और ये लिक्विडिटी और ये अमाउंट बढ़ता रहता है. सो अगर आप मान लो आप बहुत अच्छा जॉब करते हैं, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका एडवाइज़र बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में इन्वेस्ट कराने का, और आपका रिटर्न 20% हो जाता है, तो यही 4 करोड़ की फिगर 7 करोड़ बन जाती है. और अगर ये 30% हो जाता है तो यही 7 करोड़ की फिगर 11 करोड़ बन जाती है. तो इट इज़ मेनली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर लीवरेजिंग द मनी दैट यू आर गेटिंग. You're choosing to pay your regular EMIs for your completion of home loan, और जो आपके पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आया है उससे आप मार्केट में इन्वेस्ट करके ना सिर्फ वो होम लोन और उसका EMI और उसका इंटरेस्ट ख़त्म करेंगे, बट अपने लिए एक कैपिटल भी बिल्ड करेंगे, राइट. नाउ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें सब पूछते हैं कि अभी लोन बंद कर देते हैं, EMI जो होगी हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे. तो अगर आप वो भी कैलकुलेशन देखें जो कि आपकी स्क्रीन्स पे हैं, अगर आप वो EMI बंद कर दें, आपने लोन पे ऑफ कर दिया और वो EMI को आप SIP के थ्रू मार्केट्स में डालना शुरू करें, तो आप कुछ 3 करोड़ कुछ लाख रुपए कमाते हैं. स्टिल वो कुछ 1 करोड़ या फिर 80 लाख 90 लाख कम है जो कि आप आज वो लिक्विडिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करके डाल सकते हैं. सो मेरे हिसाब से जब भी आपके पास कोई होम लोन चल रहा है, अगर आपके पास कोई लोन चल रहा है, कोई होम लोन चल रहा है, आप प्लीज़ अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करिए रादर देन कैलकुलेटिंग कि मेरे सर पे बहुत लोन लायबिलिटी है.
Net worth is nothing but your assets, your whatever you're owning minus your liabilities. अगर वो assets minus liabilities positive है तो आपका होम लोन कंप्लीट हो गया, there is nothing to worry about. और अगर वो नेगेटिव है तो आप और सेविंग करिए और इन्वेस्ट करिए और उसको पॉजिटिव करिए, रादर देन हैविंग दैट इन योर माइंड कि मेरा एक लोन चल रहा है. आप नेटवर्थ कैलकुलेट करिए और उस नेटवर्थ को पॉजिटिव करने की कोशिश करिए. लोन अगर 6-6.5% पे मिल रहा है, मार्केट्स अगर आपको 15%, 20% या 12% का भी रेट देती है, you will end up making more money as your capital and pay off the loan along with their interest also. Not just that, one more important thing, you have liquidity in hand. So अगर मेरा आज 1 करोड़ का लोन चल रहा है, मेरे पास 1 करोड़ कहीं से आए और उसको मैंने अगर लोन रीपेमेंट में डाल दिया तो मेरे पास लिक्विडिटी क्या बची. कल को मेरे कोई हेल्थ इमरजेंसी हो, कहीं पे कुछ यूज़ करना हो तो मैं उस लिक्विडिटी को यूज़ नहीं कर पाऊँगा. So by investing, you are also generating, you're not only generating capital and also paying off your loan, but you also have liquidity with you, which is very important in any time for that matter. Hope you like this video, and if you did, please subscribe to our channel. Very interesting content coming up. Have a lot of things to share with you guys. Please subscribe to our channel. Thank you so much.